विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन
और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। INS विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला, गत्वरा गामिनी तरीहि, जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका, तरुणी लोला, गत्वरा, गामिनी, जंगाला, प्लाविनी, धारिणी, वेगिनी हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी।
जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे
समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है, जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, एक बार लाल किले से मैंने नागरिक कर्तव्य इसकी भी बात कही है। इस बार मैंने उसको दोहराया भी है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। साथियों, आज जिस तेजी से वैश्विक परिवेश बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उसने विश्व को मल्टीपोलर बना दिया है। इसलिए आने वाले समय में भविष्य की गतिविधियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा, ये भविष्य दृष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है
सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे। INS विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की। And just like that, India's first indigenously built aircraft carrier INS Vikrant has been commissioned by Indian Prime Minister Narendra Modi at India's Kochi shipyard today. The 45,000-ton warship, largest ever to be built in the country, has completed years of trials. It's a defining moment for the Indian naval forces and the country. The first ever aircraft carrier to be indigenously designed and constructed, INS Vikrant will strengthen the country's standing as a blue water navy, a maritime force with global reach and capability to operate over deep seas. Indian Prime Minister Narendra Modi has commissioned India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant. During this event, Prime Minister Modi also unveiled the new naval ensign, doing away with the colonial past and befitting the rich Indian maritime heritage. This giant warship, housing state-of-the-art automation features, will contribute significantly towards enhancing India's maritime capabilities. Now, this commissioning of INS Vikrant, it's being seen as a significant step towards India's self-reliance in the defence sector. INS Vikrant, it's the largest ever ship built in India's maritime history, built at a cost of 20,000 crores. It's been named after India's first aircraft carrier that played a vital role in the 1971 war. Our guests here this morning would be delighted to know that the live broadcast of this ceremony is being broadcast on Doordarshan, our national television. And not only is the broadcast going all over India, but also all across the world over satellite television and the internet. Big thanks to the crew from Doordarshan. As we mentioned earlier in the afternoon, in the morning, after the national anthem, we will be having a fly past. In fact, 2 of them. Due to prevailing weather conditions, we are all seated here, so we may not be able to have a close look at the flight past, but I'm quite certain that we are going to feel and hear the fly past. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस पूरी कमीशन सेरेमनी में और अब यहां पर निशान समारोह देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ में, और ये भव्यता विशालता दर्शाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है। Sound control. Flight deck of INS Vikrant commissioning will be marked by hoisting the tricolor on the flag staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship.
Vikrant Vishesh hai, Vikrant Vishisht hai. Vikrant is special, Vikrant is superior. In the words of Honorable Prime Minister, INS Vikrant symbolizes Atmanirbhar Bharat. और ये तस्वीरें अब निशान समारोह की तैयारियां, कलर सेरेमनी जिसको कहा जाता है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर नौसैनिक युद्धपोत पर 2 ध्वज होते हैं और अग्रिम भाग में राष्ट्र ध्वज एवं पिछले भाग में नौसेना का निशान होता है। वो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में, नए स्वरूप में, भारतीय रूप में आज नौसेना को मिला है। The color guard will be giving salute to the Prime Minister. The color guard giving salute to the flag, the naval band playing the national anthem in some time during the hosting of the tricolor and the ensign. Please rise for the national anthem. हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो पूरे सम्मान के साथ हमने देखा किस प्रकार से राष्ट्रगान के साथ में यहां पर निशान सेरेमनी हुई और जो नेवी का ध्वज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त INS विक्रांत पर। ये नया ध्वज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और औपनिवेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिकता झलकती थी उससे आगे बढ़ते हुए आज सभी गणमान्यों के साथ नया उत्कर्ष देखने को मिला और ये फ्लाई पास्ट की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ नेवल्स एयर प्रोवेस, थ्री चेतक ऊपर आकाश में देखिए राष्ट्रीय followed ध्वज by एवं नेवल एनसाइन का advanced गर्व light से फहराते helicopter, हुए 3 advanced चेतक light हेलीकॉप्टर का helicopter पहला हवाई led by दस्ता Commander B. जिसका Madhukiran नेतृत्व कर रहे हैं and कमांडर Chetak ईशान महापात्रा। led by Commander Ishan Mahapatra. बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं किस प्रकार से ये फ्लाई पास्ट जहां पर 3 चेतक हवाई जहाज, इसके अलावा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। नौसेना का निशान ध्वज के साथ में, राष्ट्रध्वज इनके साथ में, ये गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। Prime Minister waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B पनडुब्बी प्रतिरोधी और Seeking 42 ब्रावो कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में। सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की। आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some light combat aircraft from Indian Navy
will be माननीय positioned. प्रधानमंत्री जहाज बिल्कुल के अपने फलक आप का में बेहद अनावरण खास, करेंगे। क्योंकि विक्रांत INS विक्रांत बहुत खास है। और अब एक तरीके से देखा जाए, आज ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण, और इस विक्रांत INS विक्रांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है। और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento लिमिटेड के अध्यक्ष एवं in a while. निर्देशक द्वारा We also saw a while back Prime Minister, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को INS विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत तालिका हस्तांतरित करेंगे। अब मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश को अपनी गूंज से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर विमान, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अर्जुन मेनन। अब आ रहा है सैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रतिरोधी उपकरणों से लैस P-8I विमान, जिसके चालक हैं कमांडर कुलदीप मेहता from Hindustan Aeronautics Limited, led by Captain Arjun Menon. P-81, P-8I, one P-8I on your screens, maneuvering, followed by Tree Hawks, led by Commander Shailesh Singh Rana. और अब बारी है प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हॉक लड़ाकू विमानों की। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंह राणा। और अंत में
ध्वनि की दुगनी गति से उड़ने में सक्षम आसमान को चीरते आ रहा है MiG-29 के लड़ाकू विमानों का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन SS सांब्याल। And with that, India's first indigenously built aircraft carrier, INS Vikrant, has been commissioned by Indian Prime Minister Narendra Modi. We just saw the flypast right now at India's Kochi shipyard. This 45,000-ton warship is the largest ever to be built in the country and has completed years of trials. Besides this, Indian Prime Minister also unveiled the new naval ensign, 262 meters long and 62 meters wide. The commissioning of India's first indigenous aircraft carrier into the Navy as INS Vikrant marks a defining moment. The first ever aircraft carrier to be indigenously designed and constructed, INS Vikrant will strengthen the country's standing as a blue water navy, a maritime force with global reach and capability to operate over deep seas. India also now joins an elite group of nations who are capable of designing and constructing aircraft carriers. The INS Vikrant, it has a displacement capability of 43,000 tons when fully loaded. INS Vikrant is said to be the 7th largest among the carriers of carrier classes in the world. अब मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। And with that, we call to wrap on this edition of the News Bulletin. Stay tuned to WION World is One for more news and updates.
It's code red for humanity. The alarm bells are deafening. Wildfires, floods, and hurricanes. Extreme climate events warn of impending doom. Is the world heading towards a climate catastrophe? Watch WION's Climate Tracker weekdays at 12 p.m. GMT, 5:30 p.m. IST. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. Show us your faithfulness. Show us your trustworthiness. Show us your honesty. Prove us wrong. We desperately need you to prove us wrong. God help us all. If you fail to prove us wrong, God help us. One trillion species. 7.8 billion humans. 1.9 million species extinct. One planet. Where are we heading? What should we do? Watch Climate Tracker, only on WION. World is one. Well, thanks for staying with us. You're watching WION World is One. My name is Mohammed Saleh, and let's start with the top stories of the day.
Now, the state-of-the-art INS Vikrant joins the Indian Navy. This is the country's first indigenously built aircraft carrier. It is the largest ship that's been built in India's maritime history. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Equality and democracy. And ahead of November's midterm elections, American President Joe Biden delivers a rare prime-time address to the people of the United States. He says that hardcore Donald Trump supporters are actually a threat to the American democracy. And the United Nations nuclear experts inspect the Zaporizhzhia nuclear power plant. They say that the physical integrity of the complex had been violated several times. And the United States has said that Iran's response on an EU-drafted proposal to revive the 2015 nuclear deal was not constructive enough for the Americans. Now, the American State Department is to study and respond to the Iranian proposals through the EU. The world's biggest coffee chain, Starbucks, appoints an Indian American, Lakshman Narasimhan, as the Chief Executive Officer of Renkit Ben Kaiser Group as its next CEO. And Serena and Venus Williams' doubles return has proven to be a bit short-lived as they fell in the very first round at the US Open. 2 sets to love, 7-6, 6-4. Some clutch stuff from the Czechs. All right, so let's start with the big story that we are tracking on WION at this hour. The United Nations nuclear experts have reached the Zaporizhzhia nuclear power plant and have made their very first inspection. The team that's been led by the IAEA chief Rafael Grossi has said that the physical integrity of the plant has been violated several times. But the United Nations team has in fact stopped short of laying the blame either on Russia or Ukraine for carrying out shelling at the nuclear power plant. The Grossi's team crossed into the Russian-controlled territory to inspect this plant after facing several delays due to the heavy combat in the area. The team reached the Zaporizhzhia nuclear power plant and proceeded to conduct an initial check. Grossi left for the Ukrainian territory after the short inspection, but members of the IAEA have been left behind. The Ukrainian officials say that they plan to permanently station 1 or 2 of the IAEA inspectors at the Zaporizhzhia nuclear power plant. We are not going anywhere. The IAEA is now there, is at the plant, and is not moving. It's going to stay there. We're going to have a continued presence there at the plant with some of my experts. And of course, there is now we have, with my team here, we have a lot of work in terms of a detailed analysis of some of the more technical aspects of what we saw. The heavy shelling before Grossi's visit had forced the staff to shut down one of the 2 working reactors at the plant. Plant officials say that they are trying to restart the reactor. I worry, and I will continue to be worried about the plant until we have a situation which is more stable, which is more predictable. It is obvious that the plant and the physical integrity of the plant has been violated several times by chance, by deliberation. We don't have the elements to assess that, but this is a reality that we have to recognize, and this is something that cannot continue to happen. Now, the Zaporizhzhia nuclear power plant is the largest in Europe. Russian forces had taken over the plant in the early days of their invasion of Ukraine and have been stationed and in control of this plant ever since. However, the plant is still operated by Ukrainian engineers and technicians and is still connected to the Ukrainian power grid. The site has seen some pretty heavy shelling over the course of the last few weeks. Both Russia and Ukraine have blamed each other for carrying out shelling on the nuclear power plant.
But the question, of course, is this. At this point of time, the Zaporizhzhia nuclear power plant is controlled by the Russians. With that being the case, with Russian soldiers being stationed there, the question is, why would Russia want to shell a nuclear power plant that it controls? Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has applauded the IAEA team's arrival at the plant, though he has blamed some pretty cynical Russian shelling near the plant for delaying the inspectors. Now, Zelensky hopes that the IAEA's findings will lead to more global pressure on Russia to vacate the Zaporizhzhia nuclear power plant. We hope that the mission will nevertheless make objective findings based on the circumstances at the station. For more than 3 decades, 5 facilities have been under the management of our specialists. The Chernobyl station and 4 working nuclear power plants. The IAEA had never had concerns regarding the activities of any of these facilities until Russia invaded our territory and brought its madness here. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin will not be attending the funeral of Mikhail Gorbachev, who was Soviet Union's last leader. Now, Gorbachev, remember, died at the age of 91. He'll also not be receiving an official state funeral, making him the first leader since Nikita Khrushchev not to be given the honor. Now, according to the Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, Putin's work schedule will not allow him to attend the funeral on Saturday. The spokesperson further said that he had paid respects to the Soviet-era leader at the Moscow hospital on Tuesday. A widely played footage on state television showed the president laying a bouquet of red roses at an open coffin next to the portrait of Gorbachev. Videos on your screen show the Kremlin leader bowing several times. The farewell ceremony for Gorbachev, which is due to take place on Saturday, will be open to the public, after which a funeral will take place on the same day at Moscow's Novodevichy Cemetery. The Soviet leader will be buried next to his wife, Raisa, who died way back in 1999. Now, Gorbachev is a leader who's lauded by the West. He was a very controversial figure in Russia. Remember, he spearheaded reforms that brought about an end to the Cold War. However, Russian President Vladimir Putin has said that the breakup of the USSR was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. And Gorbachev presided over the breakup of the Soviet Union. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin is not the only notable absentee from the funeral. Many of the foreign leaders who might be expected to attend the funeral are currently barred from Russian soil, in retaliation to the Western sanctions that have been imposed because of Russia's invasion into Ukraine. Meanwhile, yet another Indian American has now become the CEO of a top global firm. Coffee chain Starbucks has appointed Lakshman Narasimhan, the chief executive officer of Renkit Benkaiser Group, as its next CEO. With this, Starbucks has chosen a consumer industry veteran to chart a new path after the interim tenure of Howard Schultz ends. Narasimhan was raised in Pune in India and earned a degree in mechanical engineering from the Indian city. He later moved to the United States for higher studies. Narasimhan will replace Howard Schultz, who will continue as Starbucks interim chief until April next year and will remain with the coffee chain as an advisor through 2023. The new CEO, Narasimhan, will join the coffee giant from the 1st of October. However, there will be enough challenges for the incoming CEO, including a growing union push, along with struggling sales in China, one of the chain's key areas for growth. Meanwhile, Narasimhan will also be working very closely with the founder Schultz, who's known as a very hands-on kind of a leader. Now, Narasimhan joined Renkit Benkaiser back in September 2019 from PepsiCo and was the first external candidate to take the helm of the British company since it was formed in 1999. Narasimhan, who will be relocating from London to Seattle area in the United States, brings nearly 30 years of experience leading and advising global consumer-facing brands.
Now, there's this yet another alarming report which shows us to how much our planet actually is in peril. There is compelling scientific evidence that the world is inching towards a climate catastrophe. The greenhouse gas concentrations, global sea levels and also ocean heat content has reached record highs. Now, this is according to a report that's been released by hundreds of scientists from 60 different countries. Now, the annual State of the Climate report has brought up some very pressing environmental concerns. Now, according to the US government report, not only has the amount of greenhouse gases risen to very problematic levels, but also the rate at which the greenhouse gases have been rising as a percentage of our atmosphere is also extremely worrying. The quantity of methane has never increased in a year as much as it did in the year 2020 and 2021, which was about 18 parts per billion. Now, the planet's sea levels also rose for the 10th straight year, reaching a new record of 3.8 inches above the average in comparison to what it was in 1993 when satellite measurements began. The release of this report comes a few months after the Intergovernmental Panel on Climate Change, or the IPCC report. Now, these reports have brought to the fore the challenges that the planet is facing, losses of more than $100 billion and also a very severe impact on food security and humanitarian aspects due to climate events have been reported. The report also mentions that tropical storms are expected to increase as the planet warms up considerably. It mentions that Typhoon Rai, which killed nearly about 400 people in the Philippines in December, and Hurricane Ida, which swept through the Caribbean before becoming the second strongest hurricane to hit after Katrina, are all the results of climate change. Now, even the beautiful and the celebrated cherry trees in Kyoto, in Japan, bloomed at their earliest since 1409. On the other hand, 2021 also saw record wildfires, which have continued this year as well. Now, currently, the world is witnessing record droughts, flooding events, and also the melting of the ice sheets. And without any future warming, there will still be some major effects for the low-lying areas across the globe that are home to hundreds of millions of people. Now, the planet still remains far from the track, from the ambitions that have been set up, from the goals that have been set up at the Paris Climate Accord in 2015 to aspire to limit the warming of the entire planet as a whole to 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels that refers to the time period of 1750 AD. The officials from the group of 20 major economies, in fact, met on Wednesday for climate talks in Bali but were unable to agree on a joint communique. In the month of August, the US pushed through the most expansive government package ever to address emissions from the world's largest economy. The effort will invest heavily in clean energy and comes as California is moving to require all cars to be zero emission by the year 2035, a decision with far-reaching consequences for the automobile industry. However, to limit warming to under 1.5 degrees Celsius, countries will have to work together, and there is a lot of work that needs to be done. Meanwhile, in India's semi-arid region of Rajasthan, villages are facing a water crisis due to the drastic reduction in rainfall and also the depletion of the groundwater level. Millions of people in India do not have access to clean drinking water, with women in Indian villages having to walk for miles to fetch water. Our next report gets you the details. On a balmy morning in India's village of Karansar, 51 kilometers from Jaipur, capital of the northwestern Indian state of Rajasthan, women started their daily walk from their homes with pots in their hands to a community tap to fetch water. They say that they take approximately 5 to 6 hours on multiple trips each day to fetch clean water for their families, while also looking after young children, cooking and washing for the household. When there was no water in our village, we used to face challenges in cooking, bathing the children, washing the clothes, as water is essential for household chores. When water was scarce, we used to bathe our children on alternate days and limit our water usage for cooking. We had a severe water crisis.
तो इसलिए ना पहले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। हमें फिर 10th class I have my grade 10 board exams coming up and I have a lot of studies to do, but I'm supposed to do household chores as well. So I face a lot of challenges due to this, and sometimes I even turn up late for school and the teacher scolds me. I face a lot of problems because of water scarcity. With a population of 1.4 billion, India accounts for 18% of the world's population. However, only 4% of its water resources. According to a 2022 report by the World Bank, India is among the most water-stressed nations in the world. The scarcity of potable water, aggravated by common poor water sanitation practices, contributes largely to waterborne illnesses, stunting and death. Now, the climate crisis and overexploitation of groundwater are adding to water woes. There, a woman living in a rural area has to walk 2.5 kilometers just to fetch water. Now, if you count the time that she has to wait at the water source, the multiple trips that she has to take, she can spend up to 6 hours a day just to collect water for her house. Now, a lot of the women and children are responsible to collect the water. So sometimes this means that girls have to be pulled out of school and they will not have a good opportunity to make a living for herself when she's grown up. Just 25 kilometers away from Karansar village, the lives of women from Manda Bhubawas village changed for the better after they fought for a water initiative to be implemented in the community. Men usually get ready and leave the house for their jobs, and majority of the water-related problems are faced by the women. We have to wash clothes and utensils using water. So all the women in the village came together and told the village council about the challenges we were facing, and only then were our problems resolved. Frustrated by the lack of water, a group of women got together and pressed the village chief to ensure piped water supply to their homes. They even locked the village chief inside his room in the village council building to press for their water demands. Their movement coincided with the Indian government's initiative to supply clean water to every home under its ambitious Jal Jeevan Mission or Water is Life initiative, a collaborative measure with UNICEF's WASH project. Now these women have piped supply of water to their homes. They have not only helped supply tap water to village homes, but also trained the local women to test the water's quality and educated them on ways to manage wastewater. With ready access to clean water, residents now have more time to work and earn extra income for their families. Bureau Report, WION World is One. Meanwhile, a small robot is part of an effort to make convenience shops even more convenient in Japan. It's one possible answer to Japan's worsening labor shortage. Take a look. A convenience store in Tokyo has a new helping hand. A robot named TX Kara slides back and forth behind the refrigerated shelves in the back of a Family Mart store. With its mechanical arm, the machine can grab a bottle or a can from the stacks to the side. It can also place the products in their right places. Its artificial intelligence, called Gordon, knows when and where products need to be placed. Our goal as a company is to give a hardcore smackdown to the repetitive work done by humans right now. So we want to automate all the repetitive job, boring job done by humans. So that's the direction we are going. And the best way to do that is to use a robot and machine learning, AI. TX Kara is filling a much-needed role in Japan's konbini. Konbinis are tiny stores selling snacks, drinks and knickknacks. They are open 24/7 and offer a wide range of products, but are often short-staffed. In the past, sometimes they did not have stock, but come to think of it, the shelves are always nicely stocked lately. The robots have already started refilling beverages, so the staff doesn't have to do that work, so they can change their work schedules quite efficiently.
Industrial robots are not new to Japanese factories, but Tomioka's 50-employee company sees great potential at warehouses and home centers. These robots are far more affordable than industrial robots. These robots are tailored for existing stores which do not have to change their layout or routine. The robots are also a great option for people who hope to minimize contact after the pandemic. The first thing that they can do in order to help curb the pandemics is, of course, to reduce the number of interactions between people. And that, of course, can reduce the spreading of any infectious disease. And that's the main way in which robots can help us to curb the pandemics. With technology advancing and robots taking on serious work like mapping disaster zones and helping doctors perform surgery, this humble machine makes a difference to the lives of common people. Bureau Report WION, World is One. All right, let's also now take a quick look as to what is making news at the US Open. The men's third seed Carlos Alcaraz has continued with his run for a maiden Grand Slam win as he beat Federico Coria in straight sets to enter the third round of the US Open, while the talented 19-year-old Spaniard dominated his Argentine opponent in the first two sets, winning them with a scoreline of 6-2, 6-1. The Coria has refused to go down without a fight and pushed Alcaraz in a marathon game at 4-4 in the third set. But the third seed, who saved 14 of the 15 breakpoints that he faced in the match, ruffled two unreturnable serves to get out of trouble and then sealed a 6-2, 6-1, 7-5 win with a two-handed backhand for his 46th victory of the year. He'll next face American Jensen Brookson in the next round. And 14-time women's doubles Grand Slam winning duo of Serena Williams and her older sister Venus Williams crashed out of the US Open in the first round. The Williams sisters, who were playing their very first doubles event since 2018, went down against the Czech pairing of Linda Noskova and Lucy Radica, while the first set was a back-and-forth battle between both teams, which was eventually won by the Czechs with a scoreline of 7-6. Now, the second set was all Radica and Noskova until the Williams sisters fought to the set to tie the set at 4-4. But Radica and Noskova would then win the final two games to collect the victory with a scoreline of 7-6, 6-4. Some clutch stuff from the Czechs. Now, the biggest upset of the game came in the women's draw, where Petra Martic of Croatia knocked out fourth seed Paula Badosa in a three-set affair. In a closely contested match, Badosa eked out the hour-long first set in a tie-break. The Martic then rebounded with aplomb to sweep through the last two sets and earn a 6-7, 6-1, 6-2 win after 2 hours and 5 minutes of play. The former top 15 player, who hit a total of 20 winners to just 9 unforced errors, will be facing the former world number 1 Victoria Azarenka next. And we invite you to be a part of WION's community. You can share your stories and your opinions with us. You can write for WIONnews.com. All you need to do is go through this easy registration process and you'll hear from us pretty soon. Thanks for watching. One World Trade Center that is the one where the impact.
It's code red for humanity. The alarm bells are deafening. Wildfires, floods, and hurricanes. Extreme climate events warn of impending doom. Is the world heading towards a climate catastrophe? Watch WION's Climate Tracker, weekdays at 12 p.m. GMT, 5:30 p.m. IST. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. You have ignored us in the past and you